Okay, good morning, students. Uh, we know that the Adobe Photoshop is a photo editing software. Photo editing software means whenever any function, maybe marriage or birthday, when there are some photographs are captured by professionals, okay, by photographers. So these photos are retouched by photographers with the help of फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही आपकी सारी की सारी फोटोग्राफ्स रीटच होती हैं। और आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, देयर आर सम फेक न्यूज इन विच देयर मैनिपुलेशन इज देयर। ठीक है, आपने कोई पर्सन किसी और के साथ खड़ा हुआ है, बाय फेस चेंज करके किसी और के साथ। ठीक है, तो ये जितनी भी मैनिपुलेशंस हैं, that is in the photo editing software. There are so many photo editing softwares are there, different apps are there, but till date Photoshop is the best and popular photo editing software। चाहे जितने मर्जी सॉफ्टवेयर हैं, जितनी मर्जी एप्स हैं, तो जितनी एडोब फोटोशॉप में फीचर्स हैं और जितनी ये पॉपुलैरिटी है, so more than 90% photographers are using Photoshop. So this is the important thing. Whenever you the photographer capture your photographs, there are some dark images dark, sometimes there is a image is blur. These type of things are rectified or retouched by photographers with the help of Photoshop. तो ये एक बेस्ट फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो वी आर यस प्रबल। सर आपकी आवाज सर बहुत कम आ रही है। वेट बेटा, now Prabal, it's okay? यस सर। Okay beta. So look at here, if we know that if we want to create a new file, we click on file, click on new. Okay, and then there are some features are there, height is there, width is there, resolution, this is a very important. Resolution decide the how much clear your photograph. Okay, high resolution means it size will be increased, file size will be increased, but in the same time the uh, file size will be increased, clarity will be increased, but file size also increase. Whenever any photograph is to be uploaded in internet, so resolution should be less. But whenever any photograph is for printing purpose, it means its resolution should be high. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके फोटोग्राफर्स आपके पास कोई फंक्शन में अगर फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो वो हाई रेजोल्यूशन में लेते हैं, एचडी में लेते हैं। ठीक है, पर जब आप फोटोज फेसबुक में या सोशल मीडिया में अपलोड करते हो, आपने देखा होगा, इफ यू ट्रांसफर एनी इमेज थ्रू व्हाट्सएप, आप देखोगे उसका ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन कम हो जाता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज, क्योंकि whenever you are using internet, data traveling is there. So now look at here. Then RGB mode. Okay, students, there are different modes I have already discussed, but remember one thing: whenever you will take RGB mode, size file automatically reduce. मैं आपको कोरोड्रा में भी करके दिखाऊंगा। RGB और CMYK में almost half से भी कम का size file size difference आ जाएगा. If file is of 10 MB in the CMYK, its size will be 5 MB in the case of RGB. Okay. So background, you need white background or colored background or transparent background. This is on you. ठीक है, click on OK button, then the file is created. Now, if I open any file, this is simply a creative file. I can insert image. I can also open the image. Okay. So if I click on open, search the different files in your computer system. So look at here, there is a one image. I select that image, it is open.
Now, we are now going to discuss how we can retouch this. But remember one thing, for retouching this, selection is must. It means if I want to use here, suppose there is a one eraser is here, ठीक है, आप इसको use कर रहे हो. But sometime you need selection. Selection से क्या होगा? मैंने यहाँ पे एक selection करके दिखा रहा हूँ. Look at here. I select this area and now I use eraser. Look at here. Of the selected area is applicable here. If I go outside the selected area, it will not work. So that's why selection is important. Okay. Now, how you can apply selection and different tools for selection. One of these here in a tool. Okay. Here is different selections and according to this shape. First is rectangular. If I click here, I can select only the rectangular area. Okay, rectangular. Maybe square, maybe rectangle. It's a rectangular tool. Okay. Now, आपने क्या करना है, किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करो. There are so many options out there. आपको यहाँ पे फोटोशॉप है आपके बेटा? Okay. Now there is a elliptical tools. This tool is for select your area according to the shape will be circular. Okay, like this. Clear? Next is there is a single row. So if I click here, the complete one row, but it is not so useful because their size will be very thick. Okay, and if you select here single column, again a complete column will be selected, but no any use, but these features are given. Okay, now these are selection tools: rectangular, elliptical, single row and single column. These are called marquee. So इसे हम कहते हैं marquee tool. Okay, so marquee tools, how many type of marquee tools are there? 4 type of marquee tools are there. Now, apart from these tools, there are some more tools are there. Okay, so look at here. There is lasso tool. Okay, if I right click on the lasso tool, there are lasso tool, polygonal tool and magnetic lasso tool. So discuss these three. ठीक है, तो हमने lasso tool में क्लिक किया. अब बेटा ध्यान से देखना आपने. With the help of just like pencil, ये देखो बेटा इधर. Bani, look at here. But remember one thing, your grip on your mobile should be very good. Otherwise, starting point and ending point, आपने दोनों को close करना है. Now, if I copy this area, so only this area will be copied. If I want to erase this area, तो मैं erase कर सकता हूँ इसको. ठीक है? तो आप with the, just like a pencil, you draw the line. Okay? With the help of a mouse button, left mouse button, you draw the line just like a pencil. Starting point and ending point, you will have to join. Then there will be area in any shape. ठीक है, किसी भी shape में हो सकता है. Okay, suppose you want to change the color of the eyes. ठीक है, eye का color change करना है, तो आप उसी area को select करोगे ना आप उसको. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. Is it clear? Now next is here is a polygonal lasso tool. ये थोड़ा सा different है. देखो इधर. I click here, then click here. I will have to click, not press. मैंने press नहीं रखना. ठीक है, देखो उसमें क्या था लेसो टूल में, you will have to press the your left button and draw the line. But यहाँ पे क्या है, you will have to only clicking here there. ठीक है, suppose I want type make here. I have to click.
ठीक है, अलग अलग शेप्स बना सकते हो, ये मैंने इरेजर यूज कर दिया वहां पे। तो दिस इज योर व्हिच वन polygonal lasso tool is here, ठीक है। नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट टूल इज मैग्नेटिक lasso tool। मैग्नेटिक lasso tool बहुत ही यू कैन से इंटेलिजेंट है। मैंने यहाँ पे बटन प्रेस करना है, माउस लेफ्ट बटन, और जैसे जैसे मैं लाइन को आगे लेके जाता हो जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली शेप को देख देख के ना थोड़ा सा ऑटोमेटिकली लेता रहेगा। देखो आप, मैंने कहीं पे प्रेस नहीं कर रहा, वो अपने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्शन बनेगी आपकी, पर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट यू विल हैव टू जॉइन, ओके। so according to the image it will select, it will magnetic power is there, okay। so these are lasso tool। yes, you can do anything, you can copy paste, control C करो, control V करो उसको, you can copy and paste, you can move it, ठीक है। next is now one of the wonderful tool is there, this is called magnetic sorry, wait 1 minute, here is magic wand। so in stories you already listen the there is a magnetic magic wand, ठीक है। तो मैजिक बैंड यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट वर्क करती है, ठीक है। तो लुक एट हियर, आई क्लिक ऑन मैजिक बैंड। अब मैजिक बैंड में मैंने क्लिक किया तो उसने क्या करना है, कलर की सिमिलर कलर्स इन कंटिन्यूएशन उसने पिक कर लेने, जैसे उस स्काई को पिक कर लिया ऑटोमेटिक उसने, सिंगल क्लिक। this you can here control this tolerance, मतलब कलर वेरिएशन में आप कितनी टॉलरेंस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कितना किया हुआ है 32%, तो अगर मैं कहूँ कि मैं टॉलरेंस कर सकता हूँ 50%, इसका मतलब और भी सिलेक्शन हो जाएगी मेरी। देखो कितनी सिलेक्शन होगी। इफ आई इंक्रीज इट टू 100%, तो लुक एट हियर, इन 100% उसके कुछ पार्ट भी, क्योंकि वो भी ब्लू कलर के थे, वो भी कवर हो गए, ठीक है। तो हियर टॉलरेंस मींस how much you can tolerance means you can ignore something, ठीक है। तो कितनी इग्नोर कर सकते हो, 70%। आई एम सेइंग मैं 70% इग्नोर करूंगा, इट मींस उतने कलर आपके ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप, मैं यहाँ पे अगर डिलीट की प्रेस करता हूँ, देखो कितने अच्छे शेप से उसने निकाल दिए सारे कलर्स, क्लियर। सो इट इज a, you can say it is a quick work for selection, clear। which one, magnetic sorry, magic wand tool, this is again a selection tool। next tools are your cropping tool। cropping means you want to remove the unwanted areas, okay। suppose your picture is a very big size and you need a little portion of that, what you will do here, you click on the crop area, so I select this area only, okay, selection is there, then press enter key and the limited portion will be selected, this is called cropping। so cropping means removing the unwanted area from your image, okay। suppose one photograph is with your family and you need your photographs only, okay, select that image, that picture, that portion and crop them। okay students, remember one thing, आपने देखा होगा हर एक टूल के आगे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, एलिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एम था लिखा हुआ, so these are the shortcuts। suppose I press C, so you will look at here, the cropping tool will be highlighted, these are the shortcuts, okay। if I press M, look at here, which tool is mark Q tool is applicable, ठीक है। and if I press
Any doubt in here, beta? Cropping tool shortcut key is C. Okay. Next is this is your moving object. ये जो ऊपर की तरफ है ये moving object है. ठीक है? कौन सा object है बेटा? Moving object. Suppose I have selected this area. Okay. And with the moving tool. Okay. Is it clear? So for moving tool, shortcut key is M. For undo, Control Z, that will be undo. No, only C. Only C. So next is this is only I use this area for movement, means cut and paste. ठीक है? तो मैं यहाँ पे move कर सकता हूँ. If I press Control C, okay, and in any other area, if I press Control V, देखो ये paste हो गया. ठीक है? Clear है your yes your doubt? Copy paste. Okay? Select the area, press Control C and press Control P. Control plus P. ठीक है? तो उसे paste कर सकते. Next is, and it's 8-3. Now next important tool is your gradient tool. Look at here. I am selecting one area. यहाँ ऐसे करते मैं magic band use करता हूँ यहाँ पे. Why use the magic band? Now here is ये टूल जो ग्रेडियंट टूल है, शॉर्टकट की G. ठीक है? ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर मिक्सिंग is. I click on here. At the top, there are some options are there. What type of your gradient and coloring of your gradient? Okay, ये type देखो, center, इस ठीक है? ये अलग-अलग स्टाइल्स दिए हुए हैं अपने. और जैसे मैं इसको माउस को देखो यूज कैसे करना है. प्रेस लेफ्ट की, ड्रैग इट एंड रिलीज. हाँ, जहां पे सिलेक्शन की हुई है आपने, कहीं पे भी सिलेक्शन है, ग्रेडियंट ऐसे अप्लाई होता है. क्लियर? लुकिंग नाइस ना? इससे कैसे आप यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ योर इमेज. ठीक है? मैं फिर से बता रहा हूँ. With the help of magic band, I select the area. Now, yes, Pulkit. सर आपके सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा सर. बेटा माइक में 1 मिनट बेटा. सर जब आप माइक पकड़ते हो तब ठीक हो जाते हैं, आप रखते हो तब सर आवाज बंद हो जाती है. Just wait बेटा 1 मिनट. You can. The clip is missing here ना, that's why यहाँ पे नहीं वो वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है. Prabal, now voice is okay. Okay, okay, ठीक. Now look at here.
With the help of magic wand I select area. ठीक है, मैंने कैसे किया देखो इधर, मैजिक वैंड, क्लिक हियर. अब देखो आपने रेस्ट ऑफ एरिया यू वांट टू सिलेक्ट, you will have to press shift की, नीचे प्रेस करते रहो shift की. look at here. But remember one thing, your perfection should be there. If you are very perfect in selection, then you can do this. Okay, here I am reducing the your tolerance because it is selecting the some portion of image, that is penguin का area भी select हो रहा है ना यहाँ पे. So I am clicking your 50%. I select this, press shift key, अब भी area select हो गया इसका. I am reducing tolerance. एक और है बेटा, एक यहाँ पे continuous means selection will be in a continuous form. अगर आप इसको टिक कर दोगे तो continuation में नहीं रहेगी. ठीक है, आपके पास एक मैं भी otherwise with the help of your lasso tool you will have to select all these images. Okay, ठीक है. तो after that gradient tool is there. ठीक है, there are two tools are there, gradient and paint bucket. Paint bucket will fill solid color, okay, and gradient will fill the mixing color. So if I click on gradient, select your color here. Color scheme is there. You can define also color. You can define colors. There is a different styles are there, and then press your left button, drag it, and then release. जिस भी तरीके का आपने सिलेक्शन की हुई है वो अप्लाई हो जाएगी. And in place of this, you can also use paint bucket. And here black color will be filled because my foreground color is black. I double click on here, I change the color, different color combinations. Look at here, yellow of different you can say different styles, different combinations are there. Green color, click on OK button. Like this. So this is your gradient and paint bucket tool. So with this, I discussed all the tools of chapter number 6. But in your book, there is steps. Okay, so steps are given there. So we are going to discuss these steps. Okay, so first of all, come to page number 60. There is marquee tool. So marquee tool is a selection tool. It is used to select the image or a part of image in a rectangular, square, elliptical shape. Okay, and how you can use this? Select the tool, shortcut key is M. Okay, then come to your image and press your left button and drag it. Your selection will be dependent on your tool, whether you have selected rectangular or elliptical tool. Okay, so in this way you can use this. And when you press delete key, remember one thing, the foreground color or your picture will be removed and background will be visible. तो background यहाँ पे कौन से कलर की है? White color की. Look at here. ठीक है बेटा, ये concept is clear. So this is called marquee tool. How many marquee tools are there? 4 marquee tools are there. Shortcut key of marquee tool is M. Okay. So next is your lasso tool. So lasso tool having a 3 useful tool for selecting. In this, with the help of you can your selection is customized. Customized means
In the case of MarkU, there is a rectangular, optical, your elliptical, okay? But when you want to select your area according to your requirement, just like a pencil, okay, then we use lasso tool, okay? And what is the shortcut key for lasso tool is L. L is the shortcut key for lasso tool. And remember one thing, lasso tool, how many type of lasso tools are there? Lasso tool, then polygonal tool, and magnetic lasso tool. These are 3 tools. Next is select any tool, come to your image and press left button and start to draw line. And remember one thing, your ending point and your starting point must be connected. I'm just, otherwise this is a very lengthy process. Clear? So this is your lasso tool. And here there is a discussion about a polygon. Okay, in polygon tool, you no need to continuously press your left key. Simply clicking is there. ठीक है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. और जो आपके पास मैग्नेटिक है, it take your selection area automatically. You just go through and it will select the area according to the image. So this is all about your second chapter. In next period, we will discuss the rest of the steps for different using cropping and moving. And after that, we will discuss the back exercise questions. Because the notebooks are pending, still pending of chapter number 5. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की जो नोटबुक्स है अभी तक आपने सबमिट नहीं की, तो प्लीज सबमिट दी नोटबुक्स so that I can check and return. So now if you have any query, raise your hands, beta. Student, if concept is clear, show the thumb impression. Beta, these are look at here. I select the gradient color here. Okay, here is transparency. So different options are there. In next period, I will discuss this. Yes, beta, you can.